यूक्रेन युद्ध विरति प्रसंग रे होई पारलानी डील। अलास्का रे ट्रंप पुतिन महाबैठक दुई सुपर पावर राष्ट्र मुख्यंक मध्यरे 130 मिनिट धरी चलिला आलोचना, किंतु कौनसी निष्कर्ष बाहरी पारि नाही। यूक्रेन रे युद्ध शेष करबा पई ट्रंप पुतिन कौनसी चुक्ति रे पहुंची पारले नाही। आलोचना परे उभय ट्रंप एवं पुतिन मिलित सांबादिक सम्मेलन करथिले। डील न हेबा जाय कौनसी बुझामणा होई परिबो नाही बोली अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्पष्ट करिसेंति। आलोचना बेस गठनमूलक थिला, अनेक प्रसंग रे आलोचना करा जायछि, किंतु कौनसी पूर्ण बुझामणा रे पहुंची पारि नाहु। एपर्यंत कौनसी चुक्ति होई नाही। शांति फेराई आनिबा पई एक उपयुक्त सुजोग पाइछु, किंतु एजावत ताहा हासिल करि पारि नाहु बोली ट्रंप कहिसेंति। एनै से नाटो नेतांक सह फोन रे आलोचना करिवे। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की को मध्य फोन रे बैठक विषय रे जणाइबे बोली से कहिसेंति। सेपरि आलोचना परे पुतिन कहिसेंति युद्धर अवसान हेउ बोली रूसिया चाहे। यूक्रेन जनसाधारण आमर भाई भली, यूक्रेन रे सुरक्षा सुनिश्चित हेबा आवश्यक। आमे एहा उपरे काम करबा को प्रस्तुत। संकटर समस्त मूल कारण को निश्चित भाव में दूर करा उचित। यदि 2022 रे ट्रंप अमेरिका राष्ट्रपति होई थांते तेबे रूस यूक्रेन युद्ध होई न थांता बोली पुतिन कहिसेंति, किंतु पुतिन एवं तांको दल को धन्यवाद देछंति ट्रंप। परवर्ती बैठक मस्को रे करबा को प्रस्ताव देथिले पुतिन, किंतु ट्रंप कहिसेंति आमे देखिबु खूब शीघ्र कथा होई पारु एवं संभवतः शीघ्र भेटी मध्य पारु। I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on, most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll, of course, call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. They're going to have to agree with what Marco and Steve and some of the great people from the Trump administration who've come here, Scott and John Radcliffe, thank you very much. But we have some of our really great leaders. They've been doing a phenomenal job. We also have some tremendous Russian business representatives here, and I think everybody wants to deal with us. We've become the hottest country anywhere in the world in a very short period of time, and we look forward to that. We look forward to dealing. We're going to try and get this over with. We really made some great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir. We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax. That made it a little bit tougher to deal with, but he understood it. I think he's probably seen things like that during the course of his career. He's seen it all, but we had to put up with the Russia hoax. He knew it was a hoax, and I knew it was a hoax, but what was done was very criminal. But it made it harder for us to deal as a country in terms of the business and all of the things that we'd like to have dealt with. But we'll have a good chance when this is over. So just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting, and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant. But we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Our negotiations have been held in a constructive atmosphere of mutual respect. We have very thorough negotiations that were quite useful. I would like to thank once again my American counterpart for the proposal to travel out here to Alaska. It only makes sense that we've met here, because our countries, though separated by the oceans, are close neighbors. Naturally, under the condition of serious and painstaking work, this work has been done in general. Me and President Trump have very good direct contact.
неоднократно We've и spoken откровенно multiple times. We spoke разговаривали по frankly телефону. on the phone. К нам, как известно, в Россию несколько раз приезжал спецпредставитель special envoy президента США of господин the president, Mr. Witkoff, Регулярно traveled out to Russia контактировали several наши times. помощники и главы Our внешнеполитических advisors and ведомств. heads of foreign Как ministries вы хорошо kept in знаете, touch all the понимаете, time. одним из And you центральных know fully вопросов well that one of стала the ситуация central вокруг issues Украины. Мы was the видим situation стремление around администрации Ukraine. We США see и the strive of лично the президента Трампа administration and содействовать President Trump разрешению personally to украинского help конфликта. facilitate Его the желание resolution of the вникнуть в Ukrainian суть conflict и and his понять strive его to истоки. get to the Я не раз crux of говорил, the что matter to для understand России its history события на Украине is связаны с precious. фундаментальными As I've угрозами said, нашей the национальной situation безопасности. in Ukraine Более has to do того, with мы fundamental всегда threats to считали our и считаем security. Moreover, украинский we've народ, always я говорил об considered этом неоднократно, the братским, Ukrainian как nation, это ни and I've said странно it multiple прозвучит times, a в brotherly сегодняшних nation. How условиях. У strange нас it may одни корни, и sound in these все conditions. We have the происходящее same для roots, нас and everything это that's трагедия и happening is a тяжелая tragedy боль. for us, a Поэтому terrible wound. наша страна искренне Therefore, the заинтересована в country том, is чтобы sincerely положить interested этому in конец. putting an end Но to при it. этом мы Me and President наладился Trump очень хороший have built a very деловой и good, доверительный business-like and контакт. trustworthy И contact. у меня есть все основания And I have полагать, что every двигаясь reason по to этому believe that пути, мы moving down можем this path, дойти и до, we can come, чем быстрее, тем лучше, the sooner the до better, завершения конфликта to the на end of the Украине. conflict. Благодарю. ए संपर्क में अधिक आलोचना करबा प्रोफेसर मानस बेहेरा अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ जोड़ी होछंती। प्रोफेसर बेहेरा स्वागत करिवि कलिंग टीवी को। प्रोफेसर बेहेरा जो आशा रही ताहा से भली किछि साध्य हेला भलिया लागू नाही, किंतु आलोचना रे केवल ई सीमित रहिला कि बैठकटी केवल आलोचना सीमित नहीं, सीज फायर युद्ध विरति है नहीं जो कथा विश्ववासी अपेक्षा करते। ट्रम्प जाइए विश्ववासी कही आगु जे जदि युद्ध विरति न हम ताले एटा फ्रस्ट्रेटिंग हम, किंतु ट्रम्प निजे वक्तव्य मीटिंग पर जो प्रेस को वार्ता देले से कहले आमर आलोचना एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव, अत्यंत उत्पादनक्षम अति भल होईची एवं आमे ग्रेट प्रोग्रेस किछि अग्रगति करिछु, किंतु मेजर पॉइंट रे किछि हम पहुंची पारनो सफलतार सहित निश्चय से सिग्निफिकेंट पॉइंट जोटा मीन करूछन सीजफायर हे नै परवर्ती पर्यायर हबो तार्थ रशिया कोड ना कोटी समय नेइछि टाइम बाय करिछि पॉइंट ऑफ लैंग्वेज एवं तांकर भाषा उभय नेतांकर देखिए तो किछि तो अग्रगति हेइछि, किंतु जो भाव रे ट्रम्प जाइथिले एवं सीजफायर करियो बोली के प्राक सूचना देइथिले तांको पई किछि दवा पई विश्ववासी की बा यूरोपीय यूक्रेन मानकु किछि रहिला नै, किंतु सी उत्साहित थिले एवं क्रांत लागुथिले भी उत्साहित थिले एवं 10 रु 10 मार्क से फॉक्स न्यूज जो पचरा जाइथिला जे वो मीटिंग विषय रे आपनकर रेटिंग केते से 10 रु 10 कहले। तो डेफिनेटली एथुर जना पड़ुछि आलोचना अग्रगति किछि सत्य ऊपर आलोचना है जोटा परवर्ती पर्यायर यूक्रेन सहित कथबार्ता करके द्वितीय पर्याय बैठक में निष्पत्ति नियाजिबो, किंतु सुविधाजनक स्थिति निश्चित भाव में रशिया रहिला, कारण सीज फायर न होइकि मध्य तार जो आंतर्जातिक एक घरिकिया आपण कटिगला एवं अमेरिका सहित मध्य आलोचना हला, कूटनैतिक संपर्क रहिला, वाणिज्यिक आलोचना मध्य हला, अलगा स्पेस क्षेत्र रे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्षेत्र रे केमिति करा जाई परिबो से संपर्क रे आलोचना हला। तार तो कोड ना कोड गोटे नॉर्मलाइज करिया पे रिलेशनशिप अमेरिका सहित सेथे रूस सफल हला, किंतु पर्टिकुलरली यूक्रेन कथा जेतबेले पुतिन कहले जे यूक्रेन बा यूरोपीय राष्ट्र माने एथरे किछि अडुआ न पुरांतु असुविधा न करंतु। बिल्कुल असुविधा न पुरांतु ये कुआ जायछि, किंतु